नाउ कुछ दिन पहले तक Yeah. हमारे देश में जो घी होता है उसको विलेन बना दिया गया था Yeah. कि घी तो मतलब एकदम मौत है. Yeah. सो नाउ स्लोली देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हु आर प्रोमोटिंग Yeah. घी एज वेल. Yeah. सो जब तक हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी कुछ नहीं बोलते तब तक नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता है. Absolutely. सो व्हाट इज द राइट साइंस बिहाइंड घी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? Yeah. So ghee is actually one of the best fats that you can get in India, right? In fact, now if you see, look at the West, now they've started consuming ghee, Yes, right? yes, उल्टा yes. हो गया. हाँ, जो हाँ, पहले उन्होंने ही घी को विलेन बनाया था, अब वो घी कंज्यूम करना चालू कर दिया. Yes. So ghee is, first ghee is a rich source of saturated fats, right? So it doesn't oxidize. It's very stable and it has a high smoke point. यानी आप उसमें कुक भी करोगे तो कुछ नहीं होता. घी यानी ब्रेक डाउन नहीं होता जल्दी. So it's a great source of great source of fats for your body. The second thing is also ghee has butyrate. So butyrate is also something that is a fat that encourages better gut health, right? तो आपके gut health के लिए भी अच्छा है. और ट्रेडिशनल विजडम भी है घी के अंदर कि हम इन आवर कल्चर कहते हैं कि घी तो उधार लेके भी घी खाना चाहिए, है ना. यानी कि आपके पास पैसे भी नहीं है तो उधार लेके घी खाओ. तो घी इतना इंपॉर्टेंट है कल्चरली एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू इट. बट एट द सेम टाइम does not mean that you get a tumbler of ghee and have it every day, right? Everything in moderation. So yeah, maybe don't have सूखा रोटी जो without घी का जो रोटी होता है. You can put ghee on your roti. Don't go overboard on it. अच्छा नहीं, चलो घी 1-2-3 चम्मच खाने पे इसका मतलब ये है कि घी कच्चा भी खाया जा सकता है. देयर इज नो हार्म ऑन दैट. Yeah, 100%. You can have it cooked, you can have it kacha, you can have it in any form. It's super stable and the benefits of it don't diminish if you cook with it or if you have it raw, doesn't matter, right? But again, I would say like tops maybe like 2 tablespoons in a day. Should not That should be the exceed maximum. that. Yeah, should not exceed that for sure. कुछ आप इसके बारे में भी बता सकते हैं बिकॉज जैसे आपने ऑयल के बारे में बताया कि उसको कोल्ड प्रेस या जो वुड प्रेस्ड होता है वो लेना बेहतर होता है, वैसे ही घी बनाने का भी प्रोसेस होता है. बिलोना एक प्रोसेस होता है. देयर आर डिफरेंट अदर engineering process as well. Right. So what is the difference between those? So the Bilona ghee is actually made without applying any heat, right? So this is the wood press of It's ghee. a wood press, yes. It's like the gold standard of making ghee. right? जहाँ पे बिल्कुल ही they don't apply. So it's made from, so पहले उसका दही बनता है, दही बना के फिर they जो आप पुराने वो मूवीज में देखेंगे जो the ladies would churn the ghee, right? Yes. So that's actually how it gets made. मक्खन से घी में convert करना हाँ, है. exactly, right? The white butter gets converted into the ghee. Yeah, absolutely. So that's actually really good. There's a now new thing about A2 ghee as well. Yes. Now A2 is basically just the kind of cows, right? That does not speak about the quality of the milk or the quality of the ghee. It's actually It is the breed of the it's cow. the breed of the cow. Yeah, it's the breed of the cow. So ठीक है, अगर आपके पास you have that kind of money to spend and you want to go for that because it's significantly more expensive, you can do that. Okay, I have no objection. But ऐसा नहीं है कि वो महंगा है तो अच्छा है. अच्छा है, बिल्कुल ही नहीं, right? Okay. है उसमें benefits, not that, but it's not so significant to warrant Got it. that kind of this thing for it. But at the same time, घी खाना बहुत ज़रूरी है, right? आप A2 खाइए, आप बिलोना खाइए, आप ट्रेडिशनली जो घर पे बनाते हैं, मेरे घर पे घी बनता है, गर्म करके बनता है, वो घी खाइए. But because again, ghee is heat stable, right? So even when you extract the ghee by heating it, it doesn't break down. So benefits still remain intact, right? Maybe the cold pressed version or the Bilona one has maybe slightly more benefits in that, but ऐसा नहीं है कि ये बहुत ख़राब हो गया, right? तो ये भी आप खा सकते हैं. अगर आपके घर पे घी नहीं बनता है तो अच्छे ब्रांड्स हैं घी के जो आप परचेज कर सकते हैं, right? And you get those brands as well, right? Even at the basic Amul ghee, right? At the basic, right? तो वो भी आप ले सकते हैं. तो there is no excuse to. And is there any difference between the cow ghee and that buffalo? Not much. They are both equally good. But आप घी लें डेली आपके डाइट में कुछ भी प्रकार के घी लें. Yes.